As we delve into our past, there's one name whose writings remain eternally relevant. Chanakya. A brilliant strategist, philosopher, and military advisor. He left an indelible mark on our nation's story. Chanakya's wisdom inspired the Indian Army and claws to come together to create a multinational platform, Chanakya Defense Dialogue. चाणक्य की कुशल कूटनीतिक नीतियों से पूरी दुनिया वाकिफ है और उसी की झलक देखने को मिली चाणक्य डिफेंस डायलॉग में, जिसकी शुरुआत भारतीय सेना ने की है। और इस पूरी शुरुआत में भारत अकेला नहीं है, बल्कि भारत के साथ कई देश भी हैं। ये अपने आप में एक ऐसा मंच है जिसकी शुरुआत पहली बार भारतीय सेना ने की है, जिसका लक्ष्य है सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी रणनीति तैयार करना जिसे पार पाना आगे किसी भी दुश्मन के लिए इतना आसान ना हो। क्या है डिफेंस डायलॉग? इस चाणक्य डिफेंस डायलॉग में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया? उपराष्ट्रपति, सेना प्रमुख इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने क्या कहा, वो जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग की जरूरत भारतीय सेना को क्यों है और भारत कैसे कई देशों को इस मंच पर एक साथ लेकर चल रहा है, इसकी क्या वजह है, ये भी समझने की जरूरत है। भारतीय सेना द्वारा संचालित चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर व्याख्यान के साथ संपन्न हो गया। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 6 अलग-अलग सत्रों में आयोजित कार्यक्रम भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सेवा व्यापक सुरक्षा के लिए सहयोग विषय पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य सहयोगात्मक सुरक्षा समाधानों को बढ़ावा देना था। The Chanakya Defense Dialogue, this inaugural flagship event conceived by the Indian Army, could not have come at a more critical moment in international affairs. I strongly commend this pioneering initiative of the Indian Army. This will afford a productive platform where defense strategy and collaborative partnership will converge to forge a secure, stable, and prosperous future in the vibrant landscape of South Asia and the Indo-Pacific. This innovative initiative will serve as a vital platform for the exchange of insights and discussions on critical security matters, further enhancing the nation's strategic awareness and expectedly catalyzing resolutions of complex issues. It is indeed a privilege to address the inaugural Chanakya Defense Dialogue, a flagship national security event being organized by the Indian Army and the Center for Land Warfare Studies. We are especially honored by the gracious presence of the Honorable Vice President of India, and we are grateful, sir, that you found the time to be in our midst, as also for consenting to deliver the special address. We look forward to your wisdom and insights. The unprecedented churn in global landscape that has set into motion a chain of events as well as some new trend lines. Amongst others, we need to take particular note of the growing salience of national security in the international affairs and the renewed currency of hard power. चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहना शांति का मार्ग है। एक राष्ट्र की ताकत सबसे प्रभावशाली रक्षा और निवारक है। Emergence of Bharat as a leading global economy, coupled with its phenomenal growth, is a stabilizing factor
for global peace and harmony. Peace is not an option. It is the only way. Its disruption leads to human misery and global challenges. There is need to seek peace at all costs through ideation, advocacy, outreach, persuasion, and dialogue, as also through strength, the latter one being of extreme import. चाणक्य रक्षा संवाद जैसे कार्यक्रम का संचालन सेना पहली बार कर रही थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और अमेरिका समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। There would be focus on evolution of a strategy for security measures in the region to fortify India's position as a ready, resurgent, and relevant stakeholder among the nations of this region. When the world is somewhat on an edge, perhaps on a powder cage, with many a cliff-hanging situations, the conception of an ideation forum to dissect contemporary challenges to global security and peace is indeed thoughtful and timely. My compliments to the Indian Army, the Chief of Army Staff, and the Army leadership for orchestrating this event. उपराष्ट्रपति ने सुरक्षा माहौल को बढ़ाने में देश की सॉफ्ट पावर और आर्थिक ताकत का उपयोग करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, ड्रोन और हाइपरसोनिक जैसे तकनीक ने युद्ध के चरित्र को फिर से लिखा है। इन क्षेत्रों की कुशलता ही भविष्य की रणनीतिक समृद्धि और असफलता का निर्धारण करेगी। Economic strength, diplomacy, and innovative military-industrial ecosystem. Military, I emphasize, industrial ecosystem, a resilient supply chain architecture, critical materials, rare earths, scientific prowess, ideational acuity, a strong R&D base, private sector competencies in both capacity building and war fighting. These diverse pieces must all come together to create a robust power dynamic. Collaborative security and innovative partnerships seem to be the way forward, and it appears perhaps the only way forward. Emerging deep technologies like artificial intelligence, robotics, quantum, India is focusing on that. Semiconductors, India is focusing on that. Biotech, drones, and hypersonics are not only rewriting the very character of war, prowess and mastery of these domains will determine the strategic hubs and of nodes of the future. यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्धों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण और आर्थिक परस्पर निर्भरता के बावजूद संघर्ष जारी है। In such a scenario, the wisdom of such a worldview is reinforced by the worrying turn of global events in recent times, more specifically, as was already indicated, the expanding arc of conflict and the failure of deterrence, first in Ukraine and now in West Asia. It is worrisome that globalization and economic interdependencies are failing to preclude conflicts. इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह भी मौजूद रहे। सेना प्रमुख ने दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव की चर्चा की। उन्होंने वैश्विक मामलों में राष्ट्रीय हित की बात की। आर्मी चीफ ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेशनल सिक्योरिटी की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। The pandemic, which began as a health crisis, ended up as a national security event.
close on the heels of the cataclysmic or ism in Ukraine, we are now faced with an escalating conflict in West Asia. These instabilities and challenges are compounded by notable economic turbulence and the weaponization of multitudes of attributes and domains, from information to supply chains. Issues like radicalization, terrorism, piracy, illegal migration, refugees, and climate change add to the bouquet of global concerns. Not only is the Cold War peace dividend dwindling, the world seems to be fracturing in myriad ways. New divisions are coming to the fore between the East and the West, as also between the global North and the global South. कार्यक्रम में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भी चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे लिए चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। रूस यूक्रेन की लड़ाई एक सबक है कि हम आर्म्स के इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सेना का ध्यान सुरक्षा बल के पुनर्गठन, प्रौद्योगिक समावेशन, मौजूदा संरचनाओं में सुधार, संयुक्तता और मानव संसाधन प्रबंधन पर भी है। The essence of these words and thoughts find reflection in our engagement mechanisms with other nations. Our outlook emphasizes respect for sovereignty and territorial integrity of all nations, equality of all, peaceful resolution of disputes, avoidance of use of force, and adherence to international laws, rules, and regulations. Our commitment towards positively engaging all stakeholders has been unwavering and enduring over the years. Signatures of this can be seen in our policy initiatives and participation in various multilateral frameworks, be it the Neighborhood First, BIMSTEC, IORA, the Indian-ASEAN engagements, Indo-Pacific Oceans Initiative, SAGAR, and the Indo-Pacific Economic Framework, to name a few. सेना का ध्यान सुरक्षा बल के पुनर्गठन, प्रौद्योगिक समावेशन, मौजूदा संरचनाओं में सुधार, संयुक्तता और मानव संसाधन प्रबंधन पर भी खास तौर से है। The globalized world that we once applauded is now fraught with difficulties. It is moving towards decoupling, de-risking, and perhaps deglobalization. Technology is driving geopolitics like never before, transforming not only strategic competition but also war fighting. In fact, technology is emerging as a new strategic arena of geopolitical competition. Even as gray zone contestations in non-traditional domains seem to be expanding, so is the probability and arc of all-out conflict. Amidst such despondency, it is my belief that India remains a bright spot. सेना में आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सेना प्रमुख ने अग्निवीरों पर भी खास तौर से चर्चा की। भारतीय सेना महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए इस मंच का आगे भी प्रयोग करेगी, जिसके लिए रक्षा संवाद शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। In the military domain, we understand our role in the emerging multilateral architecture. We are keen to enhance the scope and scale of our joint training and exercises, interoperability, sub-regional perspectives, and sharing of best practices with our friendly foreign partner nations.
To give fillip to our defense cooperation outreach, we are establishing defense wings at new locations around the world. Our national resolve to achieve self-reliance in defense hardware is being enabled by a resurgent Indian defense industry. चाणक्य रक्षा संवाद के बारे में खास बातें। यह एक नियमित मंच के रूप में काम करेगा जो विचारों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए वैश्विक रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों के खास लोगों को एक मंच पर लेकर आएगा। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक सीमा और रक्षा और सुरक्षा पर उभरती तकनीक के प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा को और बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन के प्रमुख वक्ता सैन्य रणनीतिकार, राजनयिक, रक्षा और रणनीतिक मामलों के क्षेत्र के अग्रणी बुद्धिजीवी रहे, जिसका फायदा निश्चित तौर से आने वाले समय में भारतीय सेना को मिलेगा। रक्षा प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास और परमाणु प्रसार पर भी खास तौर से इस सभा में चर्चा हुई। I am confident that this endeavor will guide us towards a brighter future. Peace and stability are not abstract ideals. They are the foundation upon which the dreams and aspirations of millions of people rest. भारत हजारों वर्षों के सभ्यता, लोकाचार से अद्वितीय रूप से संपन्न देश है, जबकि दुनिया भारत को महान आध्यात्मिक विचारकों की भूमि के रूप में भी स्वीकार करती आ रही है। निश्चित तौर से भारत कुछ बेहतरीन रणनीतिकार और कठोर यथार्थवादी लोगों की कर्मभूमि भी रही है। आचार्य चाणक्य उन्हीं में से एक थे, जिनके नाम पर इस संवाद को रखा गया। चाणक्य एक ऐसे कल्पनाशील रणनीतिकार, विचारक और शासन कला में निपुण थे, जिसका फायदा वो जहाँ भी थे उन राज्यों को भी हुआ और वहाँ की जनता को भी हुआ। उनकी दूरदर्शी सोच ने हमेशा उनको आगे रखा और शायद इसलिए चाणक्य डिफेंस डायलॉग रखने का अपना एक अलग ही उद्देश्य है और भारतीय सेना को इस बारे में जानकारी है कि आगे कैसे इन रणनीतियों का इस्तेमाल करना है, सुरक्षा के लिए, देश के आंतरिक मामलों के लिए। Acharya Chanakya, after whom this dialogue has been christened, happened to be one of such imaginative strategic thinker and a skilled exponent of statecraft, always prescient in his observations and advice. His reflections I quote, शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना राष्ट्र खोदोगे और शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति खोदोगे, अनकोट।